علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے. آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے سکھایا قلم کے ذریعے. اس نے سکھایا انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا. ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں غنی ہو گیا ہوں. بے شک آپ کے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. صدق اللہ العظیم. Now I would like to request everyone to please rise for the national anthem. Dear distinguished guests, friends from the diplomatic corps, VCs and faculty of the different institutions, former presidents, members of the Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. It is my honor to welcome you all to the first RC National Education Summit and Expo, presented by Future World Schools and TMC University College and organized by Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry. My name is Mohammad Hamza Sarosh, serving as Senior Vice President, Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry. I have the privilege of serving you as your Master of Ceremony for this august event. Today, we gather here to discuss the future of education, to share our experiences and insights, and to learn from each other. The theme of the conference, Rethinking Education, the Way Forward, invites participants to reflect on the current state of education and explore new ways to improve it. In a rapidly changing world, traditional education models may not be sufficient to prepare the students for challenges of the future. Therefore, the conference with this theme aims to bring the educators, researchers, and other stakeholders at a single platform to discuss innovative approaches to education and discuss the opportunities available to our students to prepare themselves for the changing environment and equip themselves to thrive in the 21st century. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ
بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, بہت ساری جابس ریڈنڈنٹ ہو رہی ہیں, بہت ساری بزنس ریڈنڈنٹ ہو رہی ہیں, اور آج جو ہم ایک کیلیگرافی سیکھتے تھے شاید وہ بھی ریڈنڈنٹ ہو رہی ہے. آج آپ نے جب نوٹس لینے ہیں تو آپ نے اپنے فونس پہ, اپنے آئی پیڈس پہ لینی ہے, اپنے ٹیبلٹس پہ لینی ہے, تو ایک انوائرمنٹ بالکل چینج ہوتا جا رہا ہے. تو اس ایجوکیشن کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان چیلنجز کو, اس اتنی تیزی سے بدلتی ہوئی انوائرمنٹ کو کیسے فیس کریں, اور what are the opportunities and what is the future of education, especially in context of Pakistan. Conference کو آگے لے جاتے ہوئے I will not let you keep waiting. I would like to invite the chairman of the International Education Summit, Mr. Waqas bin Mahmood, who put his heart out for this event. Mr. Waqas Mahmood, please come to the stage to share a few thoughts. Thank you very much, sir. ہردل عزیز جناب سہیل الطاف صاحب, گروپ لیڈر RCCI راولپنڈی, صدر ثاقب رفیق صاحب, سینئر نائب صدر محمد حمزہ سروج صاحب, نائب صدر فیصل شہزاد صاحب, سابق صدور معزز مقررین, RCCI کے اراکین, ہمارے شراکت دار, اسپانسر, ایونٹ کے ایگزیبیٹرز کا خصوصی شکریہ جنہوں نے اس تقریب میں رنگ بھرا, معزز فیکلٹی ممبرز, عزیز طلباء اور میرے عزیز ہم وطنوں, السلام علیکم. میں وقاص بن محمود, ایگزیکٹو ممبر راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اینڈ چیئرمین فرسٹ RCCI انٹرنیشنل سمٹ 2023, آپ کو اس پروکار تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں. یہ ایک منفرد موقع ہے جہاں ہم اپنے تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. میں مختلف الفاظ میں اس کانفرنس اور ایکسپو کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں. راولپنڈی چیمبر آف کامرس پہلی بار یہ کانفرنس اور ایکسپو منعقد کر رہا ہے, جس میں اکیڈیمیا, انڈسٹری اور بیرون ملک تعلیم, جاب کے حصول کے لیے کنسلٹنٹس ایک ہی چھت کے نیچے موجود ہیں. پاکستان میں رائج تعلیمی نظام پر نظر دوڑائیں تو آج بھی 90% تعلیمی نصاب نظریاتی اصولوں پر مبنی ہے. جہاں ایک تحقیق کے لیے ہمارے نصاب میں بہت کم گنجائش پائی جاتی ہے, وہاں تنقیدی فکر اور تحقیقی درس کو ہمارے نصاب میں بہت کم جگہ دی گئی. آج بھی طلبہ ایک مخصوص نصاب کے تحت بندھے ہوئے ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو نصاب کے باہر جھانکنے, روایت کے برخلاف سوچنے اور تحقیقی فکر اختیار کرنے کی اجازت ہے, اور نہ ہی ایسا کرنے پہ ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. کچھ سوالات ہیں جن کا جواب ہم اس ایجوکیشن کانفرنس ایکسپو میں تلاش کریں گے. ان میں سرفہرست ہماری ڈگریوں کی اہمیت, کیا ڈگری نوکری کی گارنٹی ہے؟ انٹرنشپ ایک اچھا اضافہ ضرور ہے, لیکن کیا یہ مؤثر ہے؟ کیا ہمارے طلباء کو بیرون ملک پڑھنے یا جاب کے لیے جانا چاہیے؟ برین ڈرین اصل میں کیا ہے؟ مجھے امید ہے کہ جہاں تعلیمی پالیسی ایجوکیشن سسٹم موجودہ حالات کے تناظر میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو جن مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے, اس کانفرنس اور ایکسپو کے ذریعے وہ مقاصد شاید تو پورے نہ ہو سکیں, تاہم مجھے امید ہے کہ ایک سمت ضرور تعین ہو جائے گی. یہ ایک تفتیشناک بات ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ہمارا تعلیمی سسٹم کہیں بھی مددگار نہیں ہو رہا, بلکہ اخراجات کی مد میں حکومت پر بوجھ بنتا گیا. اس کی ایک بڑی وجہ تعلیمی نظام اور سکلز پر مبنی ایجوکیشن کا انڈسٹری کے ساتھ مطابقت نہ ہونا ہے. آج تک ہم ملازمین پیدا کر رہے ہیں, جبکہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ملک کو کاروباری حضرات, جنہیں آج کے دور میں انٹرپرینیورز کہا جاتا ہے, ان کی ضرورت ہے. کوئی بھی ملک آج کے دور میں اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہمارے پڑوسی ممالک کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. پاکستان کی معیشت امپورٹ پر مبنی ہے. اسے ایکسپورٹ پر مبنی کرنے کے لیے ایجوکیشن سسٹم کو انڈسٹری کی ڈیمانڈ کے مطابق لانا, جدت اور ترقی, انوویشن لانا ہوگی. میں آخر میں ایونٹ کے ایگزیبیٹرز, خاص طور پہ اپنے پلیٹینیم سپانسر فیصل مشتاق صاحب,
फ्यूचर वर्ल्ड CEO फ्यूचर वर्ल्ड और रूट्स मिलेनियम का शुक्रगुजार हूँ. इसके अलावा मैं SI UK का खसूसी शुक्रगुजार हूँ, हमारे गोल्ड स्पॉन्सर. और इसके अलावा मैं गोइंग ओवरसीज़ और NJ ग्रुप का खसूसी तौर पे शुक्रगुजार हूँ. और इसके अलावा रिफा यूनिवर्सिटी का स्पेशली मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग उन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिनके ताउन और सपोर्ट से सब मुमकिन हुआ. रावलपिंडी चैम्बर की सीनियर लीडरशिप, ख़ास तौर पे ग्रुप लीडर सोहेल अल्ताफ़ साहब, सदर साकिब रफ़ीक साहब, सीनियर नायब सदर मोहम्मद हमजा सरोज साहब, नायब सदर फैसल शहजाद साहब, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान, वाइस चेयरमैन मेरे साथ बहुत काम किया, वाइस चेयरमैन मुदस्सर मकबूल साहब, इरफान मनान साहब, सेक्रेटरी जनरल रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तमाम ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, सेक्रेटेरिएट और डिपार्टमेंट का मशकूर हूँ जिन्होंने भरपूर सपोर्ट की और इस इवेंट को कामयाब बनाया. मैं यहाँ पे राजा मुजाहिद साहब का खसूसी शुक्रगुजार हूँ. आमिर मलिक साहब और आसिम मलिक साहब का नाम लेना ज़रूर चाहता हूँ, जिनके ताउन की वजह से ये इवेंट आज यहाँ पे कामयाब हो सके. बहुत शुक्रिया. Thank you, Chairman, and we truly appreciate your efforts. अब मैं उस शख्स को दावत देना चाहूँगा स्टेज पे जिसने इस टीम को भरपूर मोटिवेटेड रखा और he led them from the front. I would like to invite the President of Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry, Mr. Saqib Rafiq, to please share RCCI's vision for education and its role in academia-industry linkages. Mr. Saqib Rafiq. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. निहायत ही मोहतरम जनाब ग्रुप लीडर सोहेल अल्ताफ़ साहब, इस हॉल में मौजूद फॉर्मर प्रेसिडेंट्स की गैलेक्सी, माय सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमजा सरोज, वाइस प्रेसिडेंट फैसल शहजाद, the chairman of the event Waqas bin Mahmood, and the vice chairman Mudassir Maqbool, the team, the president women chamber, Rawalpindi women chamber, Ms. Rifat Shaheen यहाँ पे मौजूद हैं. खास तौर पे शुक्रिया अदा करूंगा TMUC, Mr. Faisal Mushtaq साहब का, who are the platinum sponsors of the event, SI UK, the Gorings overseas, Mr. Akil, आपला भी शुक्रिया बहुत बहुत, the Rifa University, who became the silver partner, the management of schools and colleges and universities, the students, administration, and all the worthy members of Rawalpindi Chamber of Commerce and Industries. Assalamu alaikum. रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज पिछले बहुत एक तवील अरसे से इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के ऊपर बात करता आ रहा है. ये इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज है क्या? ये इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज वही है जिसकी एक मिसाल आज आपको हमसे एक मुतसिल एक हॉल के अंदर एक्सपो की सूरत में नजर आ रही है. ये समिट, ये कॉन्फ्रेंस इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के एक संग मील है जिसको हमने अबूर किया है. हमने हमेशा से कोशिश की कि उन 27 यूनिवर्सिटीज़ जिनके साथ हमारा MOU साइन हुआ हुआ है और उन कॉलेज और स्कूल्स के साथ जहाँ जहाँ पे हम कोलैबोरेशन में मुख्तलिफ अदवार में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीक के ऊपर कर लें या एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर सेशंस के सूरत में हम लोग जाते हैं. मेरे से पहले हमारे बहुत सारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो यहाँ पे मौजूद हैं इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जाके लेक्चर्स दे चुके हैं और सेमिनार्स हो चुके हैं. इस तमाम मरले को अगले स्टेप में ले जाने के लिए हमने इस एक्सपो का इनेकाद किया कि हम चाहते हैं कि हम मिल के टेबल के दोनों तरफ जो इंडस्ट्री बैठी हुई है और जो एकेडमिया बैठा हुआ है पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर काम करें. हम वो लैब्स देखें कि वो लैब कहाँ पे मौजूद हो रहे हैं कि जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ माइल करने में नाकाम हो चुके हैं. वो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जॉब क्रिएटर्स पैदा हो, ना कि जॉब सीकर्स पैदा हो. रावलपिंडी चेंबर हमेशा से ये आवाज़ उठाता आया है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और हमेशा से आगे भी उठाता जाएगा कि हमें अपने मुल्क की मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस एकेडमिया को स्ट्रॉन्ग करना है और इस एकेडमिया के साथ मिलकर जो पाकिस्तान का यूथ बल्ज है जो 65% ऑफ द करंट पॉपुलेशन है इसको एक सही डायरेक्शन में लेके चलना है ताकि पाकिस्तान की आने वाले जो एक हमारी फ्यूचर है या आने वाले जो मईशत है या आने वाले दिनों में हमने जिस मुल्क को चलाना है वो एक अच्छे हाथों में हो. हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम जब भी किसी भी मैटर के ऊपर हमने गवर्नमेंट से बात की हो या हमने कभी भी किसी भी मैटर के ऊपर बात की हो, चाहे वो सदर पाकिस्तान के साथ हो या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ हो, हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर को बेहतर किया जाए. मेरी आप तमाम जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के लोग बैठे हुए हैं से गुजारिश है कि हमें मिल के पाकिस्तान के एक ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है. हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में जाके जो स्टूडेंट्स की फिगर आ रही है वो सिंगल डिजिट में आ रही है. हम 8 to 9% के ऊपर चले जाते हैं जब हमारे हायर एजुकेशन में पॉपुलेशन की बात हो रही थी, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में
بنگلہ دیش میں اور نیپال میں یہ ملٹیپل فگرز میں 30% کے قریب جا رہی ہوتی ہے. تو ہم کیوں نہیں جا سکتے 30% میں؟ صرف ہمیں پلان کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پلاننگ میں کسی نے آ کے کچھ مدد نہیں کرنی ہے. ہم نے خود سے اس چیز کو پلان کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے, یہ جو موبائل فون آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے, یہ ٹیبلٹ جو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے, یہ لیپ ٹاپ جو آپ لوگوں کے پاس پڑا ہوا ہے, اس کو یوز کرتے ہوئے ایسے پروگرامس بنائے جائیں, ایسے کورس ڈیزائن کیے جائیں کہ ہم بہت جلد ایک آن لائن ایجوکیشن کے اندر اپنے آپ کو ایکسل کر سکیں. ہم بہت سی مثال سنتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن کے لیے 500 سیٹس ہوتی ہیں, بٹ 5000 یا 6000 اپلیکیشن آ جاتی ہیں, اور یونیورسٹی بڑے فخر سے بتاتی ہے کہ ہم نے صرف 500 اسٹوڈنٹس لیے اور باقی 5500 کو ہم نے نہیں ایڈمیشن دیا. ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم ان 5500 اسٹوڈنٹس کو آن لائن ایجوکیشن کے سیکٹر کے اندر لا کے یا آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کر کے کیٹر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہم ضرور کر سکتے ہیں, اور ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں اس یوتھ کو ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. راولپنڈی چیمبر پہلے بھی, آج بھی اور آگے بھی آنے والے وقتوں میں اس ڈائریکشن کے لیے اپنی سروسز پرووائڈ کرتا رہے گا. میرے گروپ لیڈر سہیل الطاف صاحب ہیں, ہمارے سینئر فارمر پریزیڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں. ہم سب کی کاوشیں ہمیشہ اس صورت میں رہیں گی کہ ہم مل کے پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر کو اور مضبوط کریں, ہم اس خطے کے ایجوکیشن سیکٹر کو اور مضبوط کریں, ہم ادھر سے نئے انٹرپرنورز لے کر آئیں. ہم آئی ٹی کے اندر بہت سارا کام کرنا چاہتے ہیں, ہم ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان کے اوپر بہت سارا کام کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک آئی ٹی یونیورسٹی بنے. ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ پچھلے بہت سارے عرصے میں پنڈی کے اندر ایک آئی ٹی یونیورسٹی بنانے کے اوپر ایک پورا کہہ سکتے ہیں کہ پوری آئی ٹی یونیورسٹی اینڈ آئی ٹی پارک کے اوپر بنانے کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہمارا خواب تکمیل تک پہنچے گا اور پنڈی میں بھی ایک آئی ٹی کے اوپر بہت سارا کام ہو سکے گا. میں چاہوں گا کہ تمام یونیورسٹیز ہمارے ساتھ جو اپنے آلریڈی کنیکشن اس کو اور مضبوط کریں. میں چاہوں گا کہ آپ راولپنڈی چیمبر کے ساتھ میں اسٹوڈنٹس کا جو انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز کے سیمینارز ہوتے ہیں اس کے اوپر اور انگیج کریں, اور ہم مل کے سب ساتھ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان جو ہمارا خواب ہے اس کی طرف چلیں اور اپنا حصہ ڈالیں. بہت شکریہ. Thank you, President, and very thought-provoking. No team is complete without a leader and a vision. Someone who is always there to guide the team and give them a way forward. Mr. Sohail Altaf, Group Leader of Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry, is one such person. Ladies and gentlemen, please give a warm round of applause to welcome Mr. Sohail Altaf on stage. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی محترم فارمر پریزیڈنٹ ویمن چیمبر اینڈ ایجوکیٹرز, کنسلٹنٹس, a galaxy of educators who have gathered here, members, Rawalpindi Chamber, President Rawalpindi Chamber has just gone to get the commissioner over. He's on his way. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. It is a matter of great honor and pleasure to welcome you all here this afternoon. آج وہ ایکسپو دیکھ کے بڑا دل خوش ہوا, اور مجھے ہماری یوتھ میں یہ بڑا شوق ہے کہ فارن ایجوکیشن کے متعلق وہ جانے. تو یو ہیو دا اپرچونٹی, آج بھی آپ کو یہ موقع ملے گا ٹو نو دا ایجوکیشن سسٹم ان ڈفرنٹ کنٹریز. I was very amazed to see ادھر ایسے بھی اسٹال ہے جس میں وہ ورک پرمٹ بھی ارینج کرتے ہیں. دے ارینج اسٹوڈنٹ ویزا آلسو, اینڈ ایجوکیشن تو ہمارے دین نے کہا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین جانا پڑے, لیکن ہم چین جاتے ہیں مال لینے کے لیے, ایجوکیشن کے لیے نہیں ہم جاتے. جانا چاہیے, بٹ وی وڈ لائک کہ کیمپس ادھر ہونے چاہیے. ناؤ دیٹ the kind of economic situation that Pakistan is in, probably we would encourage those who
open their campuses in Pakistan and provide that same standard of education that they are providing in their own country. Now آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری it is just representing the business community. But let me tell you, Rawalpindi Chamber is involved in all such activities which are in the national interest. Balki, let me tell you, Rawalpindi Chamber is also an institution. یہاں بھی جو ہمارے ممبرس آتے ہیں وی ٹرائی یہ فارمر پریزیڈنٹس کی گیلیکسی جو ہے ان کا جو ایکسپیرئنس ہے وی ٹرائی ٹو پاس اٹ آن وی ٹرائی ٹو groom the youngsters who join راولپنڈی چیمبر. اور جیسے پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے وی وڈ لائک کہ جاب سیکرز نہ بنے, جاب پرووائڈرز بنے. اینڈ دیر از لاٹ آف پوٹینشیل ان پاکستان. پاکستان کی یوتھ, آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس لیول جو ہے ہماری ملک کا, وہ اٹ از کمپیریبل ٹو اینی ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ. پاکستانیز جہاں کہیں بھی ہیں, whether it is England, it is USA, it is Japan, it is anywhere, they stand out. کوئی ڈاکٹر ہے وہ اسٹینڈ آؤٹ کر رہا ہے, جو انجینئر ہے وہ اسٹینڈ آؤٹ کر رہا ہے. تو پرابلم کدھر ہے؟ پرابلم پرابلی ہم اپنے ملک میں اس طرح پرفارم نہیں کر رہے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے. دس کنٹری ہیز لاٹ آف پوٹینشیل. وہ آئی ٹی کی بات ہوتی ہے, ہمارا جو بچہ یا بچی ہے جتنی اچھی انگلش اور کلیئر انگلش بولتے ہیں, وہ آپ کو بہت کم ملکوں میں آپ کو ایسے بچے ملیں گے. اینڈ اٹ از اے ایرا جس میں ڈیجیٹل ورلڈ, سوشل میڈیا, ہم آئی ٹی میں ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ Our focus has not been right. آج اس اکنامک سچویشن میں ہم ہیں, اس کی وجہ جو ہے successive governments have not been able to put the right focus. نہ ایجوکیشن کا رائٹ فوکس کیا, نہ انڈسٹری کا رائٹ فوکس کیا, اور نہ وہ کیریکٹر بلڈنگ کے لیے رائٹ ایگزامپل سیٹ کی. وی وانٹ, ہمیں اس ملک میں جتنا پوٹینشیل ہے, 220 ملین پیپل پاپولیشن, ود ایڈ افغانستان تو یہ 300 ملین سے زیادہ ہو جاتی ہے. پھر وی آر اے گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشین اسٹیٹس. سی پیک ہم ہاف وے اپنی چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. سی پیک کو وی کوڈ ناٹ کمپلیٹ. آج بھی اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو the only solution is that we have to put our house in order. We have to stand on our own feet, and for that we have to have industrialization. اور انڈسٹری جب لگتی ہے وہ جاب کریٹ کرتی ہے. انڈسٹری جب لگتی ہے تو اس میں ایجوکیٹڈ یوتھ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ابھی بھی ٹائم ہے, اینڈ آئی نو اس وقت ایک گلومی سا ایٹماسفیئر ہے پورے پاکستان میں. پیپل آر لوکنگ فارورڈ ٹو سم کائنڈ آف اسٹیبلٹی, but it is not being seen. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟
पाकिस्तान है तो ये पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान है तो ये प्राइम मिनिस्टरशिप है. It is all because of Pakistan. Whatever we are because of Pakistan. I hope the message can go to the right quarters कि लोग जो हैं वो तमाम मुख्तलिफ हलकों से ये चाहते हैं that they should shun their differences in the interest of the country, sit together and find a solution to the problems that we are faced with. ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, educators, आप whatever you are doing in the interest of the country. और ये मैं आपको बताऊं कि education जो है ये सदका जारिया है, और ये सदका जारिया आपके लिए है, आपके खानदान के लिए है, अगर आप कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी तवज्जो दें. So I would request कि along with good education, good morals, good ethics, they have to be inculcated in your students. शायद उस पे हमने इतना फोकस नहीं किया in the past, but probably this is the right time to अपनी गलतियों पे हमें गौर करना है. ये इतना प्यारा मुल्क, ये इतने अच्छे लोग, ये इतनी इंटेलिजेंट नेशन, और फिर आज हम डॉलर्स के लिए किधर पहुंच गए हैं. Something to ponder about. But you are the future of this country. The youngsters sitting over here, आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, और ये खुदादाद ममलिकत, ये जो पाकिस्तान अल्लाह ताला ने बनाया है, इंशाअल्लाह हम इस मुश्किल सूरत हाल से भी निकलेंगे. But everyone has to play his role. So हम सब मिल के अपना किरदार अदा करेंगे. रावलपिंडी चैम्बर के तमाम ओहदेदारान, सेक्रेटरी जनरल, स्टाफ, जिन सब ने इसमें अपना हिस्सा डाला है, आई कांग्रेचुलेट यू सेक्रेटरी जनरल, माशाल्लाह, वेरी वेल डन. और प्रकाश की स्पीच जब शुरू की तो वो बाकी सब तो ठीक था, जब इसने कहा मेरे अजीज हमवतनों, तो हम परेशान हो गए थे. तो अल्लाह करे वो मेरे अजीज हमवतनों ना हो, और ये पॉलिटिशियंस खुद ही समझ जाएं और इस मुल्क को आगे लेके जाएं, क्योंकि इस मुल्क ने इंशाल्लाह आगे लेके जाना है और आपने लेके जाना है. पाकिस्तान जिंदाबाद. With this, I would like to move to the next phase, where we have a esteemed panel of speakers and our panelists. First of all, I would like to invite Ms. Javeria Tariq, Regional Manager, SAUK, to talk about the opportunities present for international qualifications and how our students can pursue them. Ms. Javeria has been serving as adjunct faculty at various institutes like Nurse Business School, Zabist, and SCANS. She is also a corporate trainer and enjoys expertise in international student recruitment. Please put a round of applause for Ms. Javeria Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I'm quite overwhelmed with such a huge audience sitting in front of me, and probably among the speakers who have spoken before me, I will be considering myself as a mid-career professional and a junior to all of them. So, Rawalpindi Chamber of Commerce, thank you very much for giving me this opportunity to come here and speak in front of such a huge audience. And
I would really like to thank RCCI team for organizing an international education expo to create this awareness among our youth, which is desperately waiting for the opportunities to leave Pakistan and go abroad, unfortunately. When I look at this scenario from a business point of view, probably it would be very fruitful for the business. But when I look at this scenario from an individual who's a Pakistani by heart and a career counselor by heart, it is generally very painful to see how students and individuals are approaching us to devise certain ways for them that they can leave Pakistan and go abroad and get settled down there. I've always given a customized and personalized advice to the students who are approaching me for their study abroad options. Since I have a very deep linkage with the academia, I'm a mid-career professional with 15 years of experience in which I have been affiliated with 5 big universities of India and Islamabad, which includes NUST, Behria University, ZEBIST, SCAN School of Accountancy, Fatma Jinnah Women University, and a transnational education provider as well. So I have a very close connection and a very loving and caring kind of connection with all my students. And when the students approach us to do their applications for international destinations, we always try to guide them according to their budget and their career aspirations. Because it is not a good step anyways to go to another country and work there as a third world citizen into odd jobs, living a comfortable life in your own country and a respectable life along with your parents. There's always a flip side of studying abroad. You have to work really hard. You have to live without your family there. You have to struggle to make up a career. So whenever the students are approaching SIUK for doing their applications in the United Kingdom, since we are the official representatives of 200 universities in Pakistan, and all those universities are connected with high ranking of call and United Kingdom higher education, we always give them a customized advice, what fits in their budget, what fits their personality, what fits in their career aspirations, and we have always tried our best to help the students as much as we can, not only in their application process, in their visa process, but also letting them have good job opportunities during their post-study work visa at the United Kingdom. Having said that, we always give a customized advice to those people who do not have the budget, the whole budget to support their degree, their foreign degree. There's a lot of career opportunities for the students which stems from transnational education industry, which is booming in Pakistan. As you can say, the platinum sponsor, the Millennium Universal College, is also here with us. When a student will approach me without a very high kind of budget to study in the United Kingdom, I would always guide them for the pathway programs. This transnational education industry, which the people are not very aware of, is basically providing the opportunities to the students to start their foreign degrees in Pakistan and then later on complete these degrees in the United Kingdom. And obviously when we say that you start in Pakistan, it's only on the fraction of the cost which you would be bearing in the United Kingdom. So all my youth needs, all my Pakistani students who are sitting here or who are somehow connected to us through social media and other platforms, all they need is a good advice. So I would always try my level best to not provide any commercial kind of advice to the students, and I would request all the counselors and the consultants who are joining us for this summit as well, that always provide an advice which is going to be useful for that specific student for the next 2-3 decades of his life. This is a very important advice, and according to our religion also, we should always give the best advice, and especially when it comes to education, the advice must be very quality and very profitable for the student, very beneficial for the student when he is going international. Thank you very much. I will be in the panelists of this summit as well, and I would be answering certain questions. You can always raise up your points. Our stall is there in front of the marquee wall, and we would be here tomorrow as well. Anybody who wants any kind of personalized advice can contact SIUK team here. Thank you very much. Thank you, Mr. Velia. Now we request Mr. Akil Ahmed, CEO Bowlings, to come up on stage and brief the audience about the employment and skills requirement in the overseas market. Mr. Akil Ahmed.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी स्पीच लिख के लाया था अभी गाड़ी में आते हुए, लेकिन इधर सबकी स्पीच सुन के तो मैं अपनी तरफ से मोटिवेट करना चाहता हूँ बिकॉज I'm the product of both systems, Pakistani education system, and then I was 18. I went to study chartered accountancy in the UK, and by the age of 29, I opened my own chartered accountancy firm, and now I have a finance firm and recruitment firm, and we are doing investments as well. So from being from a middle class family to a young billionaire in the UK, without any capital, inheritance capital, I made my own capital, invested it, and made a team. And until now, I have generated more than 500 jobs inside and outside the UK. That includes Pakistan as well. One of our main achievements were creating jobs during the COVID times. When people were losing jobs, we were training people and giving them the jobs. And so we have a company called We Hiring Limited in the UK. And through that company, we are giving jobs to the individuals who have knowledge and educational degrees in Pakistan and other countries as well. Through our We Hiring company, we have a recruitment process where individuals are given online interviews, and then later on we give them work permits and a very high rewarding jobs in the UK, in Europe, and Turkey. And in Pakistan, we have created more than 50 jobs right now. And through our work permit programs, our success rate is 100%. It's because when we take candidates from here, we are not the agent, we are the employer directly. So we adjust that individual in our own companies or our partner companies. So we give 100% guarantee. And anyone who would like to come for advice, we have an office in Baria Town, Islamabad. They are free to come there, and if they want to connect to our UK office, they can connect through the Zoom call, and we can arrange their appointments. And one more thing I would like to say is that we help candidates apply for jobs and work permits in UK, Europe, and North America. And this is our success rate is 100% as individuals are given work permits and jobs in our own businesses and in our partner businesses. This is our uniqueness. We do not rely on anyone to do our business. We are not agents. We are direct recruitment company of our own group. So we are not here to do any fraud with anyone. Everything will go through proper compliance to our HR department, and we make sure that we comply with all the policies and guidelines of the relevant country and the source country as well. And through our highly recognized legal team in the UK, we make sure that candidate does not have to go through the legal procedure, which are time consuming, and they are not very cost effective for the individual as well. If someone is applying from Pakistan, due to current financial situation, there's a lot of financial difficulties for individuals. What we do is we cover their fees, the legal fees, and we take their interviews from here, and we take the most talented people from here to the UK office, train them, and give them 5-year work permit and help them up to the citizenship. And during that period, we give them professional development courses for free as well. And students who do not qualify for work permits from Pakistan, what we do is, if they are willing to study in the UK, we help them with student visas. Once they complete their degree, we transfer their student visas to our work permits by taking their interviews. So if someone is from accounting background, we will adjust them in our chartered accounting firm. If someone is from the banking background, he will go to the finance firm. And if someone is from the, someone here, President Saab here was discussing about the technology. That's my favorite subject. But as I'm from the finance background, I came to the Pakistan with a project called Point Zone. In that project, we will merge finance with the technology. In Pakistan, fintech technology is still very new, and we want to build our research and development department in Pakistan. And I would like to assure that we are not here to take money from Pakistan. We will invest our money in Pakistan, in the people of Pakistan, and take them to the UK. All right? And at the end, I would like to say a few lines.
if you guys would like to come to our office, we have a friendly team. Some of the officials have come from the UK office to help you directly. So this was our first investment because we paid for tickets from our own pocket. Yeah. So at the end, I will say, from a middle-class family in Pakistan to becoming a self-made CEO millionaire in the UK, I became a CEO in my 20s. I always say to younger people, if I can do it, you can do it as well. I always thank my mother for all. Thank you. Thank you, Mr. Akil. In the meantime, we were joined by Commissioner Rawalpindi, Mr. Liaquat Ali Chattha, and I warmly welcome him to the International Education Summit. Since we are short of time for the Commissioner, we would like to invite Mr. Liaquat Ali Chattha to please come to the stage and say a few words. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. President Chamber of Commerce Rawalpindi, دیگر چیمبر آف کامرس کے معزز ممبران اور مختلف یونیورسٹی سے پارٹیسپیٹ کرنے والے فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس، مجھے آج آپ کی اس ایکسپو میں آ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ایک انتہائی کنسٹرکٹیو کام ہے جو راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے جس کا ذمہ آپ نے سر لیا ہے. ایسی ایکسپوز یا ایسے سیمینارز یا ایسی گیدرنگز یقیناً یہ بڑی فروٹفل ثابت ہوتی ہیں کہ جن میں ایک فورم پرووائڈ کر دیا جاتا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو، اور بنیادی مقصد اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح بہتر کریں، ہم اپنے ملک میں ایجوکیشن کو کس طرح امپروو کریں، ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کس طرح امپارٹ کریں، ہم انٹرپرینیورشپ کو کس طرح اجاگر کریں، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر جو ان کا کیلیبر ہے ان کو کس طریقے سے اجاگر کریں کہ ہماری اوورآل ہمارے صوبے کی اور ہمارے ملک کی ترقی ہو. تو یہ بنیادی طور پہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی یونیورسٹیز کو یہاں اکٹھا کیا ہے، اتنے اسٹوڈنٹس کو یہاں اکٹھا کیا ہے، اور یقیناً یہی وہ چیزیں ہیں جن کی اس وقت ہمارے ملک کو شدید ضرورت ہے. میں آج سے کوئی 15 سال پہلے ایک دفعہ چائنا گیا، وہاں پہ اس وقت فیصل آباد فیڈمیک انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے بنائی جا رہی تھی، تو میں اس کا ڈائریکٹر جنرل تھا. تو ہمیں کہا گیا کہ آپ چائنا میں جائیں، وہاں پہ دیکھ کر آئیں کہ وہاں انڈسٹریل اسٹیٹ کیسے بنائی جاتی ہے، اور پھر فیصل آباد میں آ کے آپ اسی طرح کی انڈسٹریل اسٹیٹ بنائیں. تو ہم نے 15 لوگوں کا ہمارا ایک وفد تھا، ہم نے چائنا کی بہت ساری انڈسٹریل اسٹیٹس دیکھیں. ایک غنزو شہر میں ہم انڈسٹریل اسٹیٹ دیکھی، اور جو اس کا سسٹم ہمیں بڑا پسند آیا. تو وہاں چند ایک فیکٹریز بھی ہم نے دیکھی. موسٹلی ان فیکٹریز میں نے دیکھا کہ جو مالک ہیں، جو آنر ہیں، وہ بالکل ینگ لڑکیاں یا ینگ لڑکے جو اسٹوڈنٹ لگ رہے تھے کسی یونیورسٹی کے، اور پوچھا تو پتہ چلا جی یہ مالک ہے اس ساری فیکٹری کی. 1000 1500 1200 لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے. اور میں نے ایک دو سے انٹرویو کیا کہ آپ کے کو باپ دادا یہ کام کرتے تھے کہ جو آپ کو وراثت میں ملا ہے، اور اتنی بڑی آپ نے اسٹیٹ امپائر جو ہے بلڈ کر کے آپ لوگ بیٹھے ہیں. تو پتہ چلا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ اپنی اس نسل میں سے وہ پہلی لڑکی ہے جس نے اتنی بڑی انڈسٹری لگا لی ہے. اور لگانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہاں پہ ان کو جو انٹرپرینیورشپ کی پوری ٹریننگ تھی وہ چائنیز گورنمنٹ نے اس کو دی تھی، اور مختلف بینکوں نے اپنا کنسورشیم کر کے تو ان کو لونز دیے ہوئے تھے، اور ایک سسٹم بنا ہوا تھا. جیسے آج ہمارے سارے نئے اسٹوڈنٹ جابز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں انہوں نے ایک ایسا سیٹ اپ بنا کے دیا تھا کہ وہ پہلے دن سے ہی بہت بڑے انڈسٹریلسٹ بن گئے، وہ ینگ لڑکے اور لڑکیاں، اور وہ اپنے بزنس کو بڑے اچھے انداز سے چلا رہے تھے. تو یہ آج کی جو ایکسپو ہے، مجھے اس سے وہ بات یاد آئی جو میں نے آپ سے شیئر کی. یقیناً ہماری راولپنڈی چیمبر آف کامرس ایک بڑا ڈائنامک ادارہ ہے،
میں ان کی ورکنگ یہاں راولپنڈی میں دیکھ رہا ہوں. یہاں انڈسٹریل اسٹیٹ کو لگانی ہو یا اس کے اور مسائل حل کرنے ہو, نئی انڈسٹریل اسٹیٹس کے لیے ورکنگ کرنی ہو, تو یہ سارے کی ساری باڈی بڑی متحرک ہے اور بڑا اس پہ کام کر رہی ہے. اسی طرح یہاں پہ جو جمخانہ کلب بڑے عرصے سے ایک ایسے زمین ابنڈن پڑی ہوئی تھی, تو راولپنڈی چیمبر آف کامرس نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے یہاں ایک بڑا جدید انٹرنیشنل لیول کا کلب بنایا جا رہا ہے, اور اس کے اندر بھی ایک ایسی لائبریری بھی ہوگی جو آلموسٹ 15 سے 20 ہزار بکس پہ مشتمل, اور لیٹسٹ جدید ساری اس میں چیزیں ہوں گی جو ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس کے بھی کام آئیں گی. تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آج کی یہ جو ایجوکیشن ایکسپو چیمبر نے ارینج کی ہے, یہ میں ان کو بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ایک بڑا اچھا مشن ہے, بڑی اچھی ویژن کے ساتھ, بڑے اچھے ارینجمنٹس کے ساتھ انہوں نے کی ہے. یقیناً یہ جو ان کی ایفرٹ ہے یہ ہمارے ملک کے لیے, ہمارے صوبے کے لیے, ہمارے شہر کے لیے بڑی فعال ثابت ہوگی, اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہنا چاہیے تاکہ اس میں مزید جو نئی چیزیں, نئے کنسٹرکٹیو آئیڈیاز اور ایسی چیزیں ہوں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کریں. ہماری جو یوتھ ہے ان میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ کیریئر پلاننگ کی پرابلم ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ بی اے کر رہے ہیں, ایم اے کر رہے ہیں, کرنا کیا ہے, بننا کیا ہے, سٹارٹ کہاں سے کیا ہے, آخر پہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ اس طرح کی جو ایکسپوز ہیں اس میں یہ چیزیں بھی سامنے آنی چاہیے کہ بچوں کو اپنے کیریئر پلاننگ کا بھی ایک موقع ملنا چاہیے, اور ایسے چیمبر کو چاہیے ایسے کنسلٹنٹ ہائر کریں یا ان کو وزٹنگ کے طور پہ بلائیں تاکہ وہ اس یوتھ کو یہ بھی گائیڈ کرے کہ ان کا آگے فیوچر جو ہے وہ کس شعبے میں زیادہ بہتر ہے, اور پاکستان میں رہ کے انہیں کام کرنا چاہیے یا اوورسیز جا کے کام کرنا چاہیے. ان کو اپنا کس جگہ ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے اور ان کے ملک کے مفادات کا تحفظ کیسے ہوتا ہے, وہ کس طرح اپنی سوسائٹی میں ایک انتہائی فعال اور کنسٹرکٹیو اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر اپنے ان آرگنائزرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی لیڈ لی ہے اور ایک بڑا اچھا کام کیا ہے. باقی چیمبرز کو بھی ان کو فالو کرنا چاہیے. میں اپنے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان. مجھے خوشی آج اس بات کی ہو رہی ہے کہ نہ ہی صرف سامنے والے بلکہ جو پیچھے ہمارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, ممبرز بیٹھے ہیں, گیسٹ بیٹھے ہیں, وہ بھی بڑے دھیان سے سن رہے ہیں. اور جب ہم تو اپنے آپ کو بیک بینچرز کہتے تھے اسکولز اینڈ یونیورسٹیز کے زمانوں میں, بٹ آج جو بیک بینچرز ہیں بڑے ہی شوق سے سن رہے ہیں, اینڈ دس پرووز کہ دے آر ریئلی لسننگ اینڈ اٹینٹیو ٹو آل دا ڈسکشن ہیپننگ ہیئر. تو میرے خیال میں آپ سب اپنے لیے ایک بار تالیاں بجا دیں. اور انشاءاللہ اسی انرجی کو آگے لیتے ہوئے I would like to invite the keynote speaker for today's session. Unfortunately, we were supposed to be joined by Mr. Faisal Mushtaq, who is an honorary doctor and a Tamga Imtiaz winner, but he could not join us. So we have another very well-known speaker. She is an HR practitioner and an experienced educationist with over 20 years of experience. Currently, she is serving as Director Academics and Director Human Resource and Organizational Development in TMUC. In a warm round of applause, please welcome Ms. Rabia Irfan. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. I have been, listening to each one so overwhelmed by the speeches made by my colleagues. And I'm here to give my speech on behalf of my CEO, visionary CEO, legendary, and I know it's a big shoes to fill in, but I'll try my level best. So, distinguished guests, dear students, parents, and all the colleagues. So, on behalf of CEO and founder, the Millennium Education Group, Dr. Faisal Mushtaq, I appreciate the efforts of Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry for, and all involved
for initiating this big education summit, which is need of the hour, and to provide the platform to all the students to explore the future opportunities for their better tomorrow. So taking forward the conversation which Mr. Suhail Altaf was doing, so sir, the good news is, as you said, कि जो universities हैं, उनके यहाँ पर होने चाहिए institutions, foreign universities के. So this is what TMUC is doing. So we are transnational education and we are offering foreign degrees here in Pakistan with the same curriculum and with same standard. So I stand here in front of you to talk about the impact the Millennium Education College as a transnational education provider had on the youth of Pakistan and how it has worked towards establishing industry-academia linkages. So today's theme, Rethinking the Future of Education, is close to the aim of vision of TMUC. So transnational education is rapidly growing trend in higher education globally, and TMUC has been at the forefront of providing TNE in Pakistan. For several years now, TMUC has partnered with universities from the UK like University of London, University of Hertfordshire, University for the Creative Arts, ACCA, NCC, to offer students in Pakistan the opportunity to receive an international education without leaving their home country. So the impact that TMUC has had on the youth of Pakistan is significant. It has provided students with access to high quality international education, which has broadened their horizons and exposed them to new ideas and perspectives. This, in turn, has prepared them for the challenges of a rapidly evolving global economy. So one of the basic impacts of TMUC, or the significant impact of TMUC as a TNE institution, is the establishment of industry and academia linkages. So we have our own career development center, and TMUC work tirelessly to forge partnerships with various industries and businesses in Pakistan to ensure that its graduates are equipped with the skills and knowledge needed to excel in the workforce. So what we have been talking since morning is that where is the gap, where is the missing link? So I believe that, the research, reflection, and to improve the curriculum, the main local stream. So the basic impact of TNE is that they invest a lot in research. So that's why the student who graduates from TNE is market ready, and the slogan we have for TMUC is, as one of my colleagues also said, कि RCCI में भी they say the same to the youth, that be the job creators, not the job seekers. So we prepare our students according to that. So in conclusion, I would just say that the testament of the fact that whatever I've said, one of my student alumni sitting here, Mr. Mudassir, and he's the key part in organizing this whole event. So, this is how we shape the students to contribute to the community. So thank you very much and have a good day. Thank you, Ms. Rabia. Now I am overwhelmed when I will be welcoming the upcoming panelists for a panel discussion. We have esteemed speakers who will be participating as panelists. मैं अगर उनकी यहाँ पे accolades and achievements बताना शुरू करूँ तो I think मैं अगले 2 घंटे बोलता चला जाऊँगा, but उनकी जो achievements and accolades हैं वो ख़त्म नहीं होंगे. So please forgive me if I keep it very brief for introducing each and every one. So I will be inviting the panelists one by one, and then we will be heading towards the panel discussion on the theme, as I mentioned before, rethinking education, the way forward. First of all, I would like to invite Mr. Pervez Hudboy. Mr. Pervez Hudboy is a renowned physicist and activist.
तालियां थोड़ी कम हो रही हैं इस साइड से. He has won numerous awards and was included in the list of 100 most influential global thinkers by Foreign Policy magazine. Welcome, sir. Anyway. The second panelist, Director Communications, Community and Outreach at the Millennium Education, Ms. Sabina Zakir. She has been part of the education sector for the last 36 years. She is also a Change Ambassador and Master Trainer at Change in Education Foundation, which is committed to bridge the gap between provision of education services in Pakistan. Ms. Sabina, please. Thank you. Moving forward, we are joined by Ms. Shanza Khan, who is founder and head counselor at Eye on Ivy. She holds a Master's of Arts in Public Policy from Harvard University. Shanza has over 22 years of experience with top development organizations like the World Bank, Asian Development Bank, UNICEF, UNDP, and it is just to name a few. So welcome, Ms. Shanza. बोर हो गए साइड वाले कि जाग रहे हैं? Moving on, Mr. Asad Malik Mahmood, who is Head of Business Development North for ACCA. Is he here? Okay. I would like to invite Mr. Fareed Chaudhary, who is currently serving as Director Sales for Going Overseas. And lastly, I would like to welcome back Ms. Javeria from SAUK. And to moderate this discussion and engage in thought-provoking ideas, I would like to introduce the moderator for the session, Ms. Amna Salek. Ms. Amna has enjoyed over 24 years in education, and she has been awarded the UAE Government Excellence Award in 2015 in recognition of her contributions to research and impact policy development. So, Ms. Amna, over to you. Thank you. Assalamu alaikum, everybody. Assalamu alaikum, everybody. What a privilege and an honor, and I have with me an esteemed panel sitting here before us, and coming all from a very diverse background and a very good mix. So I hope we will be able to touch upon some of the key issues here and how we think we need to rethink education. So without further ado, I've just penned down a few questions, and then obviously with the conversation as it builds on, we'll sort of just take the questions and queries from there. My first question is to our Honorable Mr. Pervez Hudboy. Sir, thank you very much for joining us today, for being here. We know that, connecting to learners is a top priority as an educationist, as part of academia. But inadvertently with, post-pandemic, there have been a lot of, there's been a disconnect and a gap. And given the profile of Generation Z, it becomes extremely challenging for the academia to be able to engage learners as we should be able to. So, and we have our SDG Goal 4, talking about inclusive education, promoting quality education. How far do you think, in general, if we take a comment from how far do you think our education landscape has been able to achieve that? We are not doing well. I think it's pretty clear that Pakistani graduates are not considered of high quality. Very few of them manage to get into the best universities in the United States or the United Kingdom, and where they do, they go into soft subjects rather than those which are
the backbone of the economy. It is not marketing, it is not finances, it is not learning how to manage a hotel which is going to make a country rich. It is the imbibing, the exercising of skills which come from training the mind. अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ. सिलिकॉन वैली छोटी सी जगह है कैलिफोर्निया में, और उधर से आपके सारे आईफोन निकले, सारे कंप्यूटर्स निकले, सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, और वो इसलिए नहीं कि वहाँ पर कोई मार्केटिंग मैनेजर बहुत अच्छा बैठा हुआ था या कोई वेंचर कैपिटलिस्ट था. वो सारी चीज़ें दिमाग की तख्लीक थी, और वो आई हैं इसलिए कि उधर जो लोग गए और जिन्होंने चीज़ें ईजाद की वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लोग थे. स्टीव जॉब्स ले लें, बिल गेट्स ले लें, स्टीव वुल्फ्राम ले लें. अब मैथमेटिक्स रीढ़ की हड्डी होती है जिसके बगैर आप खड़े नहीं हो सकते. हाँ, ये जो दूसरी चीज़ें ना बड़ी अच्छी हैं, वो हमें हासिल करनी चाहिए, लेकिन देखें मैं आपको मिसाल देता हूँ पाकिस्तान से और इंडिया से और ईरान से. तो हम इस बात पे बहुत खुश हैं कि जो हमारे पिछले साल सॉफ्टवेयर के बरामदात एक्सपोर्ट्स $2 अरब के बराबर हुए थे और उससे थोड़ा सा ऊपर गए. बड़ी तालियां बजी. लेकिन अगर आप मुकाबला करें इंडिया के साथ तो इंडिया एक्सपोर्टेड लास्ट ईयर $160 बिलियन. तो जो 80 गुने का फर्क है, पूछें अपने आप से कि ऐसा क्यों हुआ. क्योंकि उधर के जो IITs हैं उनमें आप दाखला नहीं ले सकते स्ट्रॉन्ग साइंसेस और मैथमेटिक्स के बगैर. और मैं दावे से कह सकता हूं कि शायद हमारे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरान हैं पाकिस्तान में जिनके PhDs हैं वो उस एंट्रेंस एग्जाम को पास नहीं कर सकेंगे, इतने मुश्किल है. तो हम अपने आप को धोखा देते चले जाएंगे और मीठी मीठी बातें करते जाएंगे और सब्ज बाग दिखाते चले जाएंगे जब तक हमने इस बात को नहीं समझा कि स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एटसेट्रा. और एक आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि कंप्यूटर साइंस कोडिंग है. तो आपने पाइथन सीख लिया तो उसको कंप्यूटर साइंस कहते हैं. खुदा रहा, सारी दुनिया में जो कंप्यूटर साइंस है दैट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. यहाँ जो चीज़ कंप्यूटर साइंस के नाम से पढ़ाई जाती है मजाक है. तो खुदा रहा आप जाने कि जब तक तालीमी निज़ाम को नीचे से नहीं बदला जाता, जब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारी तालीम का बुनियादी जुज़्व नहीं बनते, उस वक्त तक ये इधर उधर की बातें होती रहें. Thank you so much, sir. This was really insightful, and I think it has set the momentum of our discussion for today. Ms. Sabina Zakir, if I can just pose the question, building on from that conversation, you know, our government has taken the initiative, and over the years we've had multiple curriculum reforms. The recent single national curriculum, just building on to the conversation that Mr. Hoodboy has raised, do you think our curriculum is actually helping our students learn those key competence and key knowledge? For example, you know, we were talking about numeracy and, you know, sciences and languages and critical thinking and reflection. जी मैम. जनाब मैं उर्दू में शिफ्ट कर जाऊंगी so that I just want to touch the audience. सर ने जो बात कह दी वो तो बिल्कुल आया है. And you asked him a question, he put a mirror in front of you, शीशा है, वो दिखाना ज़रूरी है. अलबत्ता हम लोग उम्मीद का कारोबार करते हैं, सो हम उम्मीद के ऊपर बात रख के अगर करें तो yes, I would say the national curriculum, the effort that was put behind it needs to be praised also. हर चीज़ में बेहतरी की उम्मीद रहती है हमने. सो इसमें भी
सिर्फ एक चीज़ जिससे कम से कम मेरी ज़ात डिफ़र करती थी वो ये था कि ये जो फॉर्मूला है कि वन साइज फिट ऑल, this how much can make a difference. Other than that, yes, there has been improvement. A lot of emphasis has been made. Lekin again, I would, if you want it connected to what was just said, core and focus हमारी हुकूमत का भी नहीं आया उस तरफ जहाँ mainly चाहिए. I think it is important for the government to realize कि वो they pick up the right resource which is right available in the country to give them the correct advice and the way forward towards it. I think that answers what you said. Thank you very much, ma'am. Ms. Shanza, if I can pose the next question to you, could you just tease it a little further, because, before we move on to tertiary and higher education, it's really about the foundations, isn't it? So, are we doing right by primary and secondary education? If you look at the countries which are most successful in the world in terms of education, you have Finland, you have Denmark, you have South Korea. And there are some key differentials between what they are following versus whether it is a single national curriculum or what was there before that Pakistan was implementing. One is they have play-based education in the primary years. Play-based education teaches you critical thinking. It helps you develop emotionally and socially. It teaches you problem solving. It increases your vocabulary. Our entire emphasis is on assessments. It's on grades. It's on the output, neither the outcome on where you're going to be integrated into the industry and employment, nor on the process, which is the process of learning. So that's a key difference. There are other things that our policymakers should also be looking at. What is the difference between these countries and ourselves? Another is even the entire education year. None of these countries have a 3-month summer break. Education is over the course of the year with short breaks in between. Another key differential element is the incorporation of skill-based education. All of these countries have internship programs at the high school, even some at the middle level. In Germany, in grade 5, the government does an assessment. A very small tier goes towards academia. The other goes towards skill-based education, which is highly paid as well as respected in the country. Now, I know our government has been working towards skills-based education for a long time. You have NAFTAC, you have TEFTAs, but go and visit the TEFTAs and PVTCs. You will see that the curriculum is outdated. You will see that the industry is not willing to employ a graduate from these institutions. This is where the private sector can play a role. In addition, there are models such as educational institutions like enablers, which are incorporating within Pakistan IT-based and skill-based education. I think that is a model that we should explore more for ourselves. Thank you very much. If I could just add on to what Shanza has said. देखिए एक पुरानी फ़लसफ़ा जो हमारे ज़माने में exist करता था, which was long time back, that there is a brain drain and brain gain, वो अब नहीं exist करता. But the fact that आप तालीम ऐसे कि जिन लोगों ने मेरे दाएं बाएं मेरे colleagues जितने भी बैठे हैं यहाँ, this is brain gain. They're all here in Pakistan. Talent की कोई कमी नहीं है. And RCCI का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ. क्या इनके हर जो लोग podium पे आए and all the others that I know from the past that have created, इन्होंने industry को भी strong किया और यहाँ आज education को पहली दफ़ा represent करने का मौका दिया और ये मौका दिया कि along with the government side जब कोई private चीज़ भी साथ आ रही होती है तो उसको blame में नहीं डालने की ज़रूरत. They're trying to make a difference and connect the world towards you. So thank you for saying that. Thank you. Thank you very much, Ms. Zakir. And building just that leads me very well to, a question coming to you, Asad. So why are our universities not top ranking in the world then? If we are trying to do everything right,
सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा जब भी किसी पैनल के ऊपर ख़ास तौर पे व्हेन आई सी समवन स्पीकिंग वेरी गुड उर्दू with very good अंदाज़े बयान, so ma'am, so a huge round of applause to you. So this is our own language. I think we should keep it at front. The point, और इसी बात से मैं अपनी बात का आगाज़ भी करूँगा, listening from the keynote speakers earlier. I think where I see the problem before I come to the exact question is that most of the time what हम पूरी गुफ्तगू के अंदर से अगर उसका हासिल निकाल देंगे तो वो सिर्फ एक गुफ्तगू रह जाएगी और उसका एक इम्पैक्ट कोई नहीं होगा. सो लाइकवाइज व्हेन वी हम इकट्ठे होते हैं और कॉन्वर्सेशंस करते हैं, अगर उसके अंदर से हम सिर्फ और सिर्फ आप कहीं पर भी चले जाएं, चाहे हम बात करें इन्फ्लुएंसर्स की, सक्सेसफुल लोगों की, सो ज़्यादा एम्फेसिस आता है कि हाउ टू अर्न मनी. ठीक है, उसमें से जो सक्सेस का एलिमेंट है, जो हम स्टूडेंट्स हैं या जो जर्नी देखते हैं जब हम बात करते हैं, तो दैट इज़ मोर अराउंड हाउ टू बी the one with more money in the pocket, right? और उसमें से कामयाब होने की डेफिनेशन अलग हो गई है, जिसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज बोलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, कम्युनिकेशन स्किल्स पीछे रह गए, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छा है, तो हम ये भूल जाते हैं कि ये चार उंगलियां मेरी अपनी तरफ भी हैं. So starting from this point, I think coming to the question जो आपने पूछा, I think उसमें जो एक सबसे important element है, that is the quality of research and development here in Pakistan, especially when it comes to the universities. एक तो ये है कि उसका ऊपर जो emphasis है in terms of the budget and investment वो भी काफ़ी low है. दूसरा ये है कि itself जो उसकी फिर एक quality है, that is also very important. फिर उसमें जो उसके कोर और क्रक्स में जो एक ग्लोबल मेकअप है या जो उसका ग्लोबल आउटलुक है, वो बिल्कुल इंक्लूसिव नहीं है. मतलब लेट्स से इफ देयर इज सम यूनिवर्सिटी हियर इन इस्लामाबाद, सो ये मे बी हार्डली ही और शी इज कनेक्टिंग टू 6 or 8 गुड पीपल अराउंड हिम हरसेल्फ. लेकिन अगर आप लिंक्डइन पे जाएं तो आई थिंक द वर्ल्ड इज ओपन टू यू, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट. आई हैव सीन पीपल डूइंग इट. एंड द अदर पॉइंट इज shyness and limitation of sharing knowledge and best practices, you know. तो उसमें भी हम अपने आप को बड़ा स्क्वीज कर लेते हैं. जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मैम ने कहा, हम बात करें यूएस की, सर ने बात की यूके की, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, दे आर ऑलवेज लुकिंग टू बी मोर एंड मोर इंक्लूसिव एंड कोलैबोरेटिंग. नथिंग इज स्टॉपिंग देम कि वो अपना फ़ोन उठाएं, ईमेल आउटलुक खोलें और 10 यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करें और उनसे सीखने की कोशिश करें. एंड आई हैव सीन इफ़ यू डू दिस, आई थिंक 10 में से 9 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो आपको उन बेस्ट प्रैक्टिसेस में कोई ना कोई कोलैबोरेशन या सपोर्ट ऑफर करेंगे. सो आई थिंक दिस इज़ द की, जिसकी वजह से very well made point. I would also like to add something to this. Since I have studied from a Pakistani university, which is quite high-ranked university, I was their gold medalist, so I always owe my success to them. But I have been working with the UK universities for past 7-8 years in my career, and I have observed this thing, that the kind of research and development they are doing and the kind of appreciation they give to their students for doing that research is commendable. पाकिस्तान में जो हमारी PhD की डिग्री है वो 5 साल में होती है और जनरली लोग 5 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते, वो 6 या 7 साल तक चले जाते हैं और उसके बाद भी उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपने फलां जर्नल में पेपर पब्लिश करना है तो आपको PhD की डिग्री मिलेगी. और जब वो PhD की डिग्री कर लेते हैं तो एप्रिसिएशन कम है. वहाँ पे 3 साल में आपकी PhD की डिग्री कंप्लीट हो जाती है क्योंकि उसमें सिर्फ आपको रिसर्च सिखाई जाती है, रिसर्च कराई जाती है. एंड आई हैव सीन देम कि अगर वहाँ पे PhD कैंडिडेट्स हमारे कैंडिडेट से आधा भी काम करते हैं अच्छा, तो दे रिसीव अ लॉट ऑफ अप्लॉज एंड appreciation from their supervisors and researchers. So criticism is less. So I would say कि research and development पाकिस्तान में बहुत अच्छी है. यहाँ के researchers और यहाँ का जब हम data analysis उनको दिखाते हैं तो दे से कि ऐसा तो हम हमारे PhD के students शायद नहीं कर सकते, but जितना वो काम कर रहे हैं, जितना वो काम करते हैं, वो अपने students को बहुत appreciate करते हैं, and then they inculcate that research sense in even the undergrad student also. The undergrad student also is judged or assessed on the basis of his research and development skills. He's generally not judged on the basis of a 3 hours paper that he's going to do.
उसको कोर्स वर्क बेस्ड असेसमेंट्स दी जाती हैं कि जो भी आपने सीखा है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें एक प्रोजेक्ट पे, तो हम आपको मार्क्स देंगे, ना कि 3 घंटे का एक पेपर दे दें जिसकी जजमेंट पे हम आपको मार्क्स देंगे. तो डेफिनेटली द क्वालिटी विल बी बेटर इन दोज इंडिविजुअल्स. सो थोड़ा सा पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को जो एक चीज़ होती है ना कि हम फॉरेन यूनिवर्सिटी से नहीं सीखना चाहते कि हमारा आपका अपना सिस्टम है, हर किसी का अपना सिस्टम है, बट थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जहाँ से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आता है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए. दिस इज ऑल आई वुड से. थैंक यू जवेरिया. मैंने आपसे सवाल भी यही पूछना था, तो आपने सवाल से पहले ही बहुत अच्छा इसका जवाब दे दिया. मिस्टर अकील, इफ आई कैन जस्ट कम टू यू विद अ क्वेश्चन. यू नो, you've talking about work placements, recruitment, you spoke about an entrepreneurial mindset. Yes. तो मुझे बताइए, जो आपके पास आजकल आपको यूथ अप्रोच करते हैं, जी, what sort of competence do they come with? You know, आपको क्या challenges या क्या gaps face होते हैं, you know, in actually helping them? जी. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम. All the respect to the seniors, to the sir and madam and the panelist. Yeah. So मैंने अपनी स्पीच में भी बोला था, I have studied up to the 12th year in Pakistan, and after I studied in the UK, and then I worked in the UK, hired people in the UK, and then hired people in Pakistan. And मैं ये कह सकता हूँ with 100% assurity के साथ, the best talent I found which worked for my group of companies was from Pakistan. All they needed was a bit of training and confidence building and motivation, that if you're doing good, you should be appreciated for that. I like the point, sorry I don't know the name, but he said speaking English has become more important than communication. I agree with him, because I can give you an example. In my sales department, I want a salesperson to sell the product, okay? I'm not there to give him bands on his IELTS result. So if he can sell the product with mediocre English as well, he is getting the job done. As a businessman, I'm happy with his skills. I will appreciate him and reward him. But if he starts focusing on the English only, okay, then he will be diverted from the main job role. Rather, he will be embarrassed, shy in front of his work colleagues. So the competence level I'm getting here, number one, everyone, most of the people are degree holder here. If they're not degree holder, they're diploma or certified, diploma holder certified. So you get a lot of educated people here, but they do not have any direction. So the reason I came after 8 years to Pakistan, once my career was built and my business was built, to create jobs here, not just jobs. We are not animals, we are humans. So what we need to do is, we need to train them, groom them. We need to give them professional development as well. There should be a concept of professional development in Pakistan. If I'm an accountant, getting ACC or CA degree is not enough. After 1 year, tax system will change. I have to adopt the new rules and the new tax system as well. So the organizations who are hiring new employees should make sure that they have the learning capacity, they have the ability to adopt new system. And and while doing the interviews, I've done many interviews with my HR while hiring for my company. What we see in the employee is that, when I applied for my first job as a bookkeeper in the UK, they never asked me from which institution you studied, from what qualification do you have. They asked me, can you learn? If you have a basic background as well, can you learn? I said, yeah, I can learn. This is the same question I asked to my employees as well. I said to them, I will give you all the resources, good salary, computer systems, softwares. I will give you research team as well. If you want to do anything in the organization, as an employer, it's my duty to give you those resources. Then there are a lot of people who are happy and they produce results, and they're producing results for me. That's why my company is growing. And like I said, in the COVID time, we generated jobs. Why we generated jobs? Because we were following a proper system. You know, there's so much negativity here. People think like, oh, there are no jobs here, there's nothing here. But if we build an individual on entrepreneurs thinking, while they are studying in the school and colleges, once they finish their college, and they will start thinking about raising their own capital. How will they raise their capital? Through their skill or education or their experience. If I'm not educated, if I don't have a degree,
I can learn a skill. I can be a construction worker. Later on, I can become a developer or builder. So this is the mindset. If we train them in a way like only you have to do master's degree, then you will do 9 to 5 job all life, and then you will retire with one house and a car. They will never think out of the box. They have to think out of the box. We need to motivate them to, they can be Bill Gates of Pakistan as well, okay? Why Bill Gates has to only come from USA? We can groom our own Bill Gates here and make one. If I can do it, they can do it as well, you know? Everything has to be done together with the unity. That's my point. Thank you very much. Thank you very much. A point well made. Sir, can I please just request you to shed some light on, you know, we talk about global competence, and just basically, I think to sum up, you know, some of the things that everybody's been saying, we've been talking about thinking skills. We've been talking about, you know, how our student, our learner needs to have entrepreneurial, innovation skills, being able to think critically, being able to do research, being able to communicate well. So how do you think, sir, the education system here in Pakistan, and particularly our public education system, needs to sort of rethink their strategies in light of that? So I think this was a very important point that you made, that we can have Bill Gates, who is a Pakistani. यहाँ आपने गालिबन ये कहा था कि जब आप चाइना गए थे तो आपने देखा कि नौजवान लड़कियां लड़के उन्होंने खुद अपनी इंडस्ट्री शुरू की है, उनको विरसे में नहीं मिली। वो इसलिए शुरू कर सके क्योंकि उनके अंदर एक ताकत थी, उनके अंदर जज्बा था, लेकिन जज्बे से ज़्यादा उनमें वो सलाहियत थी कि वो कोई नई चीज़ तसव्वुर कर सकते, उसका तज्जिया कर सकते और फिर उसको आगे बढ़ा सकते। अच्छा, अब हमने इसकी पैरवी करने की कोशिश तो की है, बहुत सारे इंक्यूबेटर्स बनाए हुए हैं। पहले तो मैं समझता था कि इंक्यूबेटर सिर्फ मुर्गियों के लिए होते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स हैं। कुछ भी नहीं निकला उनसे, बिल्डिंगें बन गई, बड़े बड़े प्रोग्राम थे, लेकिन निकला कुछ नहीं। तो आखिर ये है क्यों? मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमारी जहन साजी जिस तरह से की जाती है वो हमें कामयाबी की तरफ नहीं ले जा सकती। कुछ वक्त पहले ये बात हुई थी कि जो पाकिस्तानी बरतानिया में मुकीम हैं उन्होंने बहुत कमाल दिखाए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि उनके पास सारी सहूलियात हैं, यूनिवर्सिटियों में जा सकते हैं, बेहतरीन स्कूलों में जा सकते हैं, लेकिन जाते नहीं हैं। वो जो ब्रैडफोर्ड में है और ईस्ट लंदन में है और मैनचेस्टर में है वगैरह वगैरह। आप ज़रा जाकर देखें कि जो अच्छी यूके की यूनिवर्सिटियां हैं, क्या आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में केमिकल इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में आपको कितने प्रोफेसर मिलेंगे? बहुत ही कम, आटे में नमक के बराबर है, जबकि इंडियंस उसमें भरे हुए हैं। क्या बात है कि हमारी जहन साजी और तरह से होती है और बाकी दुनिया की और तरह से होती है। तो यहाँ ये बात आती है कि हम जिस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, और मैं कुछ बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ, ख़ास तौर पे ये जो आपने सवाल उठाया था सिंगल नेशनल करिकुलम का। देखिए, सच्ची बात करने की ज़रूरत है, इसके होते हुए पाकिस्तान कभी ऊपर उठ नहीं सकेगा। उसमें है क्या, 50% तो मजहबी मवाद है, प्लस वो जो मुतालिया पाकिस्तान स्टडीज़, और फिर हर सब्जेक्ट में उन्होंने वही बातें की हैं। जो बाकी है वो बिल्कुल जैसा कि मदरसे में होता, आपको याद करके बस रट के हाफजे पर जोर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे नहीं है। और यही सोच बरतानिया के पाकिस्तानियों में है। लिहाजा आप मुकाबला कीजिए उनका
इंडियंस के साथ, बांग्लादेशियों के साथ, ईरानियों के साथ, अच्छा ईरानी बहुत आगे निकल गए, एक मुल्क है जिससे इजराइल डरता है और वो है मुसलमान मुल्क जिससे इजराइल डरता है, वो है ईरान। क्यों? इसलिए कि उनकी बेहतरीन तालीम है और गो कि वो एक मजहबी रियासत है, लेकिन वो जितना जोर देते हैं उन चीज़ों पर वो निस्बतन बहुत कम है। हमने तो बच्चों का दिमाग माउफ किया हुआ है, तो फिर आप उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो जाके कोई इजादात करेंगे? आप ये उम्मीद करते हैं कि वो बड़े कोई सनतकार बनेंगे? नहीं होगा। अब 75 साल हमारे गुजर गए, अब रोज हम IMF के सामने जाकर उनसे मिन्नत समाजत करते हैं कि भाई हमें प्लीज गिव अस 1.1 billion dollars and then maybe China will give some and this will give some. Do you know that Gautam Adani had a loss, उसका नुकसान हुआ of $100 billion. उसने चोरी को बदमाशी की, he got caught, he lost 50% of his wealth, but he still has $100 billion left over. So what is it that India is producing and what is it that we are not? They're producing pharmaceuticals, they're producing heavy engineering, they're producing IT, they're producing agricultural products processed for selling to the entire world. ये हमारी तरह तौलिया चादर नहीं बेचते। वो जो तौलिया चादर बेचने वाले हैं, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बस उसी पर चलती है ना वो। और देखिए कितना बेचती है, $18 बिलियन। थोड़ा अगर कोई यहाँ पर है मेरी तस्दीक कर सकता, $20 बिलियन, nothing. We import $80 billion, कुछ हमारे $30 बिलियन आ जाते हैं in terms of remittances। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भेजा है सालाना $30 अरब, तो खसारा बना $20 अरब का। अब उस पर सूद अदा करने के लिए हम मजीद कर्जे ले रहे हैं। यही बात है, यही हमारी कमजोरी है। और ये शुरू कहाँ से होती है? हमारे तालीमी निज़ाम से। और इसको बेहतर करने के लिए हमने अब तक कोई इक़दामात नहीं लिए। सॉरी फॉर टेकिंग सो मच टाइम। नॉट एट ऑल। एक बात कहने दे सर, अलाउ मी टू से, सर परवेज़ जो हैं, हम मैम जिस तालीमी अदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सही कह रहे हैं, उस्ताद को तो ट्रेन कर दें। पहले टीचर्स ट्रेनिंग तो आ जाए, फिर कुछ और। 14 साल से ये डॉक्टर फैसल मुश्ताक हर साल टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं। सर हमारे मेंटोर हैं, उधर आते हैं, उधर हमें झंझोड़ते हैं, हम एक साल फिर कोशिश। बिल्कुल सही बात की, one fit all is not the answer. I did say that. And being a little, of course he has the place to say it that way. Allow me to say कि जी जो कोशिश करता है उसकी भी लेग पुलिंग हो जाएगी। I give 100% credit to these RCCI people. इन्होंने तालीम को इज्जत दे के यहाँ बिठाया है। 100% salute to each one of them. इनकी तरबियत हुई हुई है। मैं ये जो मेरा बेटा बैठा है, इसकी तरबियत पे कहती हूँ, ये अपनी वालदा को लेके आया है और उन्हीं की बात कर रहा है। जनाब, इस मुल्क में सर फरमा रहे हैं काम ठीक करो, गलत मत करो, और जो गलत है उसको उठ के गलत कहो। सर अगर ये करेंगे तो फिर आज हॉल खाली कर देंगे, फिर हर चीज़ ही गलत हो रही होगी। उम्मीद के कारोबार पे कहती हूँ कि सबसे ज़रूरी है उस असातिज़ा की ट्रेनिंग। सर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन यू आर अ पार्ट ऑफ इट। टीचर्स ट्रेनिंग डेवलपमेंट कोशिश है, भले आटे में नमक है। और यह वो चिड़िया है जिधर आग लगी हुई होगी और वो अपनी बीक में सिर्फ पानी डाल के उस आग पे डाल रही होगी, मान जाती हूँ। लेकिन सकत अगर उतनी है, हुकूमत ने जो काम करना है वो भी करना ज़रूरी है। That's what's important. Thank you so much. Sorry. Thank you. No, ma'am, thank you. Ms. Chanza, just building on to that, you know, ma'am Sabina has also touched about professional development, the importance of training, and, you know, actually giving professionals and individuals the tools to be able to deliver the curriculum. जो मर्जी curriculum बना ले,
it's if we don't have the tools to develop it, वो environment, वो impact नहीं आएगा, वो चीज़ नहीं होगी. So talking about impact, the product that comes to you, you talk to so many students, so many learners, and you counsel them. So what are the key challenges that you feel? You feel that you wish students came with a better understanding of certain aspects. What are the key gaps that you see and identify? So it goes back, I think, to when high school starts, grade 8 subject selection, grade 9, and which academic path to follow, which career path to follow. There are very few schools with trained high school counselors that do psychometric testing. What are the pathways for an individual to follow? आपका aptitude किस में है? आपके strengths क्या हैं? आपकी weaknesses क्या है? ये तो अब आप online कर सकते हैं, free of cost कर सकते हैं, and I would really encourage schools to incorporate that as part of their, academic profile, making it for the student. The second step is, and this is where industry comes in and you can play a role, offering students, high school students, internships. हमारे पास culture नहीं है यहाँ पे to send high school students for on-the-job training and experience, or even shadowing. If you're going into the medical profession, shadowing doctors, because you can't intern at a hospital at that particular level. But this is going on in other countries. This is what sets them apart. The other part is research. आप PhD level पे बात कर रहे हैं. आपको पता है कि if you're targeting top universities in the world, they now ask to see peer-reviewed, high school published research. I'm not talking about at the undergrad level. I'm not talking about the PhD level. I'm talking about at the high school level. Columbia University ने अपने admission application में ये अब सवाल डाल दिया है. Do you have peer-reviewed high school published research? So we should talk to, think tanks like SERP, like Ideas, like PIDE, integrate student research as part of the development process, which is currently missing. Sorry, मैं फिर टाइम ले लेती हूँ, बुरा लगता होगा, लेकिन मैं कह दूँ, she's so right. जैसे जवेरिया also said, इन्होंने ही कहा कि 3 महीने की छुट्टियाँ कहीं नहीं होती. हमारी उन 3 महीनों के अलावा लातादाद छुट्टी, हर चीज़ पे छुट्टी है जी. उधर से उधर मूवमेंट हो रही है, छुट्टी करा दो जी, बंद कर दो, स्कूल पहले बंद हो जाए. There is such an academic loss. वो कहते हैं वो फुलफिल ही नहीं होगा. Number one. By the way, हम इधर सारे इंडस्ट्री के लोग बैठे हैं. मेरी इनसे क्योंकि मेरा ज़ाती ताल्लुक़ रहता है इन लोगों से इसी चीज़ के ऊपर, हम समर ब्रेक में इंटर्नशिप कराते हैं जी. And we start off from grade 6th onwards. यहाँ भी कराते हैं और जो अफोर्ड कर सकता है उसको मुल्क से बाहर भी भेजते हैं. मैम शानजा के साथ हम इनके चंद चीज़ें जो कि बेहतर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ये ऑफ़र करती हैं, हम इनके साथ काम करते हैं. जवेरिया हमारे साथ काम करती थी टू मेक श्योर कि काउंसलिंग गोज़ टू एवरी इंडिविजुअल. सर हुद बॉय हमें ट्रेन करते हैं कि मत सोचो ऐसे, ऐसे सोचो, ये बात बताओ, ये करो. देखिए हम इकट्ठे हो गए हैं, आज बैठे हैं. आज एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि हम कम से कम अगर तालीम को वो जगह देंगे, अगर अपने बजट में भी दे दें तो बड़ी मेहरबानी है, पर अपने होटल्स में, अपनी गुफ्तगू में तालीम के लिए बात करेंगे, आई एम श्योर देयर विल बी अ चेंज. Thank you for saying everything that these people have said. Thank you. Thank you. Very, very. I'm really liking the way this conversation has, taken shape so far. Asad, just talking about, professional qualifications, and, because you're with ACCA and there's a lot of focus on building multidisciplinary competence and skills. So apart from, research, can you just comment on, the importance of having that holistic education outlook, from our learners? I think ACCA started back in 1904. So it's for sure 120 plus years by now. और जो उसकी वजह है कि we have been surviving by far, the one of the reason is
the shift of the strategic purpose, which used to be number one accountancy body in the world, to be the one which the world needs. No? So we have shifted our strategy कि हमें वो चीज़ बनानी चाहिए जहाँ जो दुनिया को required है. And when we talk about the world, it's all about business, wider businesses and societies. So there is a very holistic research which ACCA does, जहाँ पर हम going to the industry globally, think tanks, modern businesses, and ask them that what sort of product is required in the industry. So we keep on tailoring that. For example, आज से 10-12 साल पहले, to make it easy for everyone to understand, एक ईंट नुमा size का Nokia 3310 used to be in our pockets. If we still think that's relevant, I can bet you can check, किसी की pocket में अभी नहीं होगा. It means जो change okay, so vintage की और उसकी अपनी एक खूबसूरती है. It's something to do with the classics. So sir, apart from that, I think it's very important to get to the point, which is that we need to keep on evolving. The world is changing quite rapidly fast, और उसके अंदर हम किस तरीके से adaptation में आ रहे हैं. जिस तरह अभी recently हमारी बात हो रही है national adaptation plan के अंदर. Previously उसके अंदर अगर हम देखें ESGs की इतनी involvement नहीं रही है. हमने क्लाइमेट चेंज की इतनी बात नहीं की है जितनी अब हम बात करें. हमारी इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट आउटलुक का हिस्सा बन चुकी है ये कॉन्वर्सेशन. और गोइंग फॉरवर्ड भी आई थिंक द वे थिंग्स आर गोइंग टू बी डिजाइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट सीइंग कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है. लाइकवाइज माई लास्ट पॉइंट वुड बी अराउंड द बिजनेस मॉडल्स ऑफ द फ्यूचर. आज से किसी ने आई थिंक कुछ अरसा पहले ये बात नहीं सोची होगी कि किस तरह का बिजनेस आइडिया आएगा जिसका अपना ओनरशिप में कुछ नहीं है अपार्ट फ्रॉम द ऐप. लेट्स से टॉक अबाउट करीम, लेट्स से टॉक अबाउट बाइकिया. सो वो जो कैब्स चल रही हैं वो भी अपनी ओनरशिप में नहीं है, राइट. सो सिंपली एक फॉरम क्रिएट कर दिया और जिसके इर्द गिर्द पूरा इकोसिस्टम सर्कुलेट कर रहा है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम अपने माइंडसेट्स को भी उसी हिसाब से इवॉल्व करें, इंक्लूसिव रहें, और एक्सेप्टेंस भी इसी तरह से आती है. Thank you very much. Thank you. Mr. Veria, coming to you, just to very briefly tell us, where do you think is the disconnect? How can we bridge the gap between industry and academia? Being a business graduate, at that time when I was graduating, I found a huge gap between industry and academia. And down the lane, after 15 years, I can see that many universities are now trying to bridge that gap. And the entities like Rawalpindi Chamber of Commerce, उनका बहुत बड़ा effort है in bridging this gap between industry and academia, because they basically bring the industry to the universities and try to create a platform. जब ये MOU sign करते हैं universities के साथ, तो उनको एक platform provide करते हैं जहाँ पे professionals और industry के लोग आके बच्चों को train करें. देखिए, आपकी 4 साल की बैचलर्स की डिग्री का या आपके 2 साल की मास्टर्स की डिग्री का कोई फायदा नहीं है until unless when you are graduating you're not corporate ready. If you have 1 or 2 gold medals in the 3.8 CGPA, but when you're appearing for an interview and you can't even impress the interview panel to get that job, you're not corporate ready. There are a bulk of students who are graduating from the universities and do not understand the meaning of being corporate ready. Why would a company hire you and pay you 65,000 to 85,000 initial salary if you can't do anything for them? So this is basically the university's job to bridge that gap, and in order to bridge that gap, सबसे पहले तो जो teaching faculty वो hire कर रहे हैं, that should be trained. And there are few subjects which can't be taught by such people who have not practiced that thing in industry. So for teaching marketing, for teaching sales, for teaching such subjects जिनमें आपको practitioners की ज़रूरत है, the universities should make an effort to bring up practitioners and teach those subjects. Anybody who's teaching entrepreneurship in universities, if he or she has not been involved in entrepreneurship and has not started his own venture and doesn't know how to connect the students and their ideas with the venture capitalists, cannot teach entrepreneurship.
So I would like to conclude this question by saying that all the universities and the faculty, staff who's sitting over here, this is my humble request and a humble suggestion to please bridge this gap. Otherwise, the degree holders who are coming to the industry would feel really demotivated, would not be able to get the jobs. And the training of the teachers is very important. If you have known, there are a lot of teaching certifications nowadays which have been introduced by the Millennium Universal College and many other institutes also, which are connected with teaching at higher education level. In UK, in Australia, and USA, even if you are a PhD, you can't teach if you don't have those certifications with you. That certification is called Postgraduate Certificate of Higher Education, and that gives a kind of exposure to a literate person on how to deliver the knowledge to the students in the class. So basically, even if you are PhD, we can't deem you to be a really good teacher unless you have that professional qualification to be a provider of education. So please, जितनी भी universities यहाँ पे आएंगी, मैं उनको कहूँगी कि please do bridge this gap between your teachers. Provide them a professional qualification, a professional training. You can connect with me, you can connect with the Millennium Universal College. We have a lot of diplomas. We have a lot of certifications of teaching on the higher education level, where your teachers would just be trained for 6 months or a year, but they would become certified and qualified to teach that thing. Thank you, Mr. Vedi. Sir, you wanted to say something and... Madam, I'm very puzzled by your comment, frankly, because I've taught for 50 years in various universities around this country and in the United States. And I fear that the quality of PhDs that are teaching in Pakistani universities is so poor, that if you were to fire 50% of them, it would make no difference to the educational scenario in this country. मैं उस मैकेनिक की बहुत कदर करता हूँ जो मेरा मैकेनिक है, जो फायर ब्रिगेड के पास उसने काम खुद से सीखा, अनपढ़ है, लेकिन उसने इतनी मुश्किल गाड़ियाँ ठीक करना सीखी. उसने एक ऐसी गाड़ी बनाई है जो पानी के ऊपर चलती है, पंखे लगे हुए हैं साइड से, there's a hull. He is completely illiterate, मगर वो बहुत बड़ी जहानत का मालिक है. दूसरी तरफ ये जो PhD हारे गुलू हैं, ये मुसीबत बने हुए हैं हमारे लिए. इनको कोई नौकरी इसलिए नहीं देता माँ सिवाय यूनिवर्सिटियों के कि इनको कुछ भी नहीं आता. मैं जब चेयरमैन था फिजिक्स डिपार्टमेंट कायदे आजम यूनिवर्सिटी का, तो मैंने ऐसे लोगों को निकालने की अपनी इतनी ज़्यादा कोशिश की कि रिटायरमेंट तक मैं कोशिश करता रहा और मैं नाकाम रहा, और ये मुसीबतें जो है अगले 30 साल तक वहाँ पढ़ाते रहेंगे. तो सॉरी, आई कैनॉट एट ऑल अग्री विथ व्हाट यू हैव सेड. आई थिंक these people are untrainable. There's nobody who is going to fix a PhD because that degree has already been given. Get rid of them, start a new university with faculty which knows its subject. Otherwise, it'll keep going. We have to be honest with ourselves. Sorry about that. Sir, thank you so much, and absolutely true. We need to be honest. And on that note, can I please request you to share with us, are there any seeds of hope? Can we fix this trajectory? Very briefly, if you can just share with us. Can I fix this? No, but society as a whole can fix it. देखिए, पहली बात ये कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि तालीम का मकसद क्या है, और मेरी नज़र में एक ही बुनियादी मकसद है, और वो ये कि जहन के दरीचे खोले, वो खिड़कियाँ खोले, ताकि हम दुनिया को जान सकें और फिर मज़ीद सीखने के काबिल हो जाएं. Education is about creating a mindset so that you can keep learning all your life. और आज जिस किस्म के challenges हैं, देखिए ना, अभी कुछ वक्त पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हुआ था कि इससे हम सारे बेकार हो जाएंगे. हाँ, हो जाएंगे, अगर हमने उस तरह का जहन बनाया नहीं और इस चीज़ को
प्राइमरी लेवल से शुरू करना है और फिर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के बाद भी इसको जारी रखना है. For this we have to understand what education means. Thank you very much. Thank you very much to my esteemed panel. Really, really grateful to the insightful discussion here. And I think sir ne bahut khoobsurati se isko sum up kiya hai कि education is about developing the right mindset which will enable us to continue to learn. जब तक वो नहीं develop होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते. Thank you very much to the chamber. Thank you very much again to all of you. Very honored to have shared the podium with you today. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. I will request the panelists to please stay. We will take some questions very briefly. Audience में से अगर किसी questions हैं तो we will take a couple of questions very briefly. Mike, please दे दें, यहाँ से एक question है, please. Assalamualaikum everyone. I'm Abdul Wahab Qureshi and I'm a student of the Government and Public Policy at the National Defense University. So, first of all, I would like to appreciate the panelists for their intellectual discourse. So, my question is that, as we all know, that their education has never been in our priorities. We had other priorities in here in Pakistan. So, the question is that what policy framework should be designed to promote industrial linkage with the academia? And in addition to it, do you think that the recent economic and political backlash has somehow impacted our education system? And do you think is there any educational reform that are needed in Pakistan? That's it. Thank you. किसी particular panelist से आपका question है या anyone can answer? Anyone, please. देखिए जी, सबसे पहले तो it's important to understand that we start seeing the scope to some external entities around you. For example, जब हम 12वीं जमात तक या हाई स्कूल अपना कंप्लीट करते हैं, so हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम अपने इर्द गिर्द अपने कज़न्स में, फेलोज़ में देखते हैं कि नंबर 1, 2, 3 कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, और उसमें एक हजूम लग जाता है उस तरफ जिस तरफ 10 लोग जा रहे होते हैं, या तो हमारी प्रायोरिटीज़ को पिक करने का एक तरीका है. एंड इस सारी हासिल में वी एक्चुअली फॉरगेट जो एक्चुअली स्कोप है इज़ एक्चुअली विद इन यू. So when we talk about within you, it's about how we are working our own branding, right? So जो policy की आप बात कर रहे हैं, that comes जो सर और हम पहले बात कर चुके हैं रिसर्च की और डॉक्टरेट की, कि वो जो लोग मार्केट में आ रहे हैं उनकी अपनी एबिलिटी क्या है, या जो मैम बात कर रही थी being corporate ready. I have taken a lot of good interviews where a PhD qualified has come up for an interview for a basic middle management position और उसको खुद ये आइडिया नहीं है कि उसका एक इम्पैक्ट इस जॉब से या बीइंग अ डॉक्टर वो क्या है, और उससे आप एक सिंपल सा सवाल करते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और वो इसी सवाल के ऊपर प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता. व्हेन यू सी अराउंड योरसेल्फ नंबर ऑफ रेज्यूमेज जो आप इकट्ठे करते हैं इंटरव्यू के लिए, और आपको पता चलता है कि उसमें जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिखी हुई है वो 50 के 50 ने या 100 के 100 ने गूगल पे पहले लिखा है, और वो पहले 10 सर्च इंजन ने जो शो किया है एज इट इज़ कॉपी कर दिया है. बट एट द सेम टाइम व्हेन यू रीड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स लाइक पीपल लाइक स्टीव जॉब्स, आई एम रेडी टू टेयर डाउन वॉल्स, बिल्ड ब्रिजेस एंड लाइट फायर्स एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. सो बिल्कुल उसमें लगता है कि एक ह्यूमन एक्सप्रेशन का एलिमेंट है. सो व्हाटसोएवर वी आर गोइंग टू create as a policy, it's very important कि उसको expression centric, heart centric और ground zero की realization के साथ intact रखा जाए, हमारी economic outlook के साथ aligned रख कर बात की जाए, जिस पर हमने बात की national adaptation plan की और ESGs की और being inclusive. ये सारी चीज़ें आप जो भी policy as an educationist बनाए, way forward
اس کے اندر سسٹینیبلٹی کا ایلیمنٹ لے کر آئیں, جس طرح سے جس پر SDGs بات کر رہے ہیں اس ٹائم. سو آئی بلیو جتنی بھی بڑی لیڈنگ اکاؤنٹنسی باڈیز ہیں دنیا میں, TMUC ہو گیا یا جو بھی لوگ ایک رائٹ ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں, دے آر ویری ویل فیملیئر کہ ان 13 یا 14 SDGs میں سے وہ کون سی 9 یا 8 کے اوپر اگلے 10 سال میں 20 سال میں کام کرنے والے ہیں. سو دس از جی تھینک یو. if I can just add on. بیٹا آپ جو ہو نا, ظاہر ہے پاکستان کے انفارچونیٹلی اس حصے میں آئے ہو جدھر کیوس ہے, لیکن جب میں تمہاری عمر کی تھی نا, پاکستان تب بھی بحران میں سے گزر رہا تھا انفارچونیٹلی. سو یہ ایک جملہ ہمارے ساتھ ٹیگڈ ہے. یو مسٹ لسن ٹو واٹ پیپل who have gotten educated and have come back and are trying to say something. دیکھیے آپ نے اپنے شروع کی بات میں کہہ دیا تھا کہ ہماری تعلیم تو ہمارا کرائیٹیریا ہی نہیں ہے, اٹس ناٹ آر پرائیورٹی. سو مجھے یہ تو خوشی ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے اس کو یہ معلوم تو ہے کہ نہیں ہے. اور ادھر ہمارے جو گروپ تھے پریزیڈنٹ کے RCCI کی, کیا خوبصورت بات انہوں نے کی تھی کہ للہ چھوڑ دیں پاکستان کو اور سیٹوں کو, اور اس کو بڑھنے دیں, تعلیم کو کچھ امپورٹنس دیں تاکہ کسی طریقے سے یہ معاملات آگے چل پڑے. People do have solutions, but there has to be a framework. That's what sir is trying to say. Thank you, beta. Due to paucity of time, I will direct the audience کے questions کو kindly brief رکھیں, and نہایت ہی مدبانہ گزارش ہوگی پہلے سے بھی, کیونکہ ہم آنسرز دیکھیں بہت لمبے بھی چلیں گے, اگر ہم تھوڑا سا بریف رکھیں تاکہ ہم زیادہ کوشچنس تھوڑے سے لے سکیں شارٹ ٹائم. جی پلیز. السلام علیکم ٹو آل. بیسیکلی ابھی آپ نے کہا بریف رکھیں, تھوڑی سی 2-3 لائنیں اس میں ایڈ کروں گا, دین آئی ول گو فار این اے کوشچن. آئی واز سٹنگ جہاں پر ہمارے ایک اسپیکر آئے ہوئے تھے, وہ کچھ بات کر رہے تھے ماڈرنائزیشن کے بارے میں. تو بیسیکلی کیا ہوا کہ لکیلی میں ان سے ایک کورس بھی پڑھ رہا تھا وچ از ریلیٹڈ ٹو دا تھرمو ڈائنامکس. سو جب انہوں نے وہ بات کی اس کے اندر, تو انہوں نے ہمیں 2 سلائڈس دکھائیں. ایک سلائڈ کے اندر ایک کیمرہ مین جو کہ ہیلی کاپٹر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور وہ شوٹ کر رہا تھا. سیکنڈ سلائڈ میں انہوں نے کہا جی آفٹر 25 ایئرس دیر واز این اے ڈرون جو کہ اڑ رہا تھا, اور لائک انہوں نے کہا جی کہ جو پائلٹ ہے اس کی جاب گئی, جو ایروپلین ہے اس کی جاب گئی, کیمرہ مین کی جاب گئی, کیمرہ کی جاب گئی. اب آفٹر دیٹ جب اس کا کوشچن آنسر سیشن ہوا تو میں نے ان سے کہا سر کہ آپ ہمیں کورس پڑھا رہے ہیں جس کا نام ہے تھرمو ڈائنامکس, اس میں آپ نے بوائلر کے لیے جو ہمیں کورس یا جو بک پڑھائی جا رہی ہے وہ 1961 کی رائٹ ہے, اور 1961 کی رائٹ کی ہوئی کتاب سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں میں ایک ایسا بوائلر بناؤں گا جو کہ یا ایسی اسٹڈی آؤٹ کروں گا کہ جو کہ 60 سال بعد آج جو ماڈرنائزیشن اس فیلڈ میں ہو گئی ہے وہ اور میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا rather than talking on education, we have to shift towards the quality of education. جی ٹھیک ہے, we have very short time, please, we have very short time, I respect, لیکن تھوڑا سا ہمیں کٹ شارٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ نیکسٹ پرسن پلیز آئیے. تھینک یو. اس کا جواب مختصر 2 تھرمو ڈائنامکس کا آپ نے نام لیا. تھرمو ڈائنامکس ایک ایسا مضمون ہے جو میں خود پڑھاتا ہوں. آج کل جو میں پڑھاتا ہوں یا جو گزشتہ 3-4 سال سے پڑھا رہا ہوں, اس میں ہم بوائلر نہیں پڑھاتے, اس میں ہم پڑھاتے وہ تھرمو ڈائنامکس جو کوانٹم کمپیوٹرز کے لیے اب درکار ہوگی, کیونکہ وہ بھی ایک طرح کی ہیٹ انجنز ہیں جو اس میں میکینیکل ورک ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ انجن کا ہوتا, لیکن there is work that is being done, there is energy that is being put in. یہ ایسے آفاقی اصول ہیں تھرمو ڈائنامکس کے کہ ان کا اطلاق جگہ جگہ ہو سکتا. میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ جو مضمون آپ پڑھتے ہیں اس کو اچھی طرح سے پڑھیں, اس پر عبور حاصل کریں, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی زیادہ وسعت ہے. پھر آپ اس بات سے پریشان نہیں ہوں گے کہ ہیلی کاپٹر پہلے تھا اور اب ڈرون ہے. جی پلیز ویری بریفلی جسٹ اے کوسچن پلیز. السلام علیکم. سب سے پہلے چیمبر آف کامرس کو مبارکباد دو جنہوں نے بہت اچھا مائک. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ پاکستان پیسوں کے لیے مانگ رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. تو اگر آپ اسکلڈ ورکرز کے اوپر توجہ دیں, پولیٹیکنک انسٹیٹیوٹ اور باقی, ہمارا ملک بن گیا ہے ڈگری ہولڈرز کا.
आपने इसको कंडेम किया अभी और आपने कहा कि डिग्री होल्डर्स जो है वो ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर हम यहाँ पे अपना चाइना का मॉडल पेश करें और उसके मुताबिक देखें तो ये यहाँ पे अगर आप स्किल्ड वर्कर्स पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट और बाकी वोकेशनल इंस्टीट्यूट उनको अगर प्रमोट किया जाए और वहाँ से स्किल्ड वर्कर आएँ तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरक्की और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनके तमाम की तरक्की में एक बुनियादी किरदार अदा करता है और हम एक मजबूत मुल्क बन सकते हैं। लेकिन जाना हमें वहाँ है, डिग्री होल्डर्स की तरफ जाना, तो डिग्री होल्डर बाद में बेरोजगार होते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बहुत बिल्कुल आपने सही बात की। प्रोफेसर साहब, आप ये जानते होंगे कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वक्तन फवक्तन पाकिस्तानी लेबर का जायजा लेता है और उससे ये पता चला है कि जो मशरक़ वस्ता में पाकिस्तानी हैं फ़कत 3% ऐसे हैं जो ऊंचे दर्जों पर हैं, यानी कि जो इंजीनियर, मैनेजर, डॉक्टर, प्रोफेसर हैं। बाकी जो 97% पाकिस्तानी हैं वो मजदूरी करते हैं, कहीं गाड़ी चलाते हैं, कहीं सड़कें खोदते हैं। तो आपकी ये जो बात है कि अगर इनको वो हुनर सिखाए जाए, अगर इनको और चीज़ों के अलावा इनको अच्छी अंग्रेजी आती हो, इनको आप वो चीज़ें सिखाएं जो इंडियन सीखते हैं, तो फिर ये जो $30 अरब सालाना हमें मिलते हैं वो 30 से 60 से 90 तक हो सकते हैं। मगर इसमें बुनियादी बात यह है कि जो एजुकेशन आप देंगे पाकिस्तान में वो मेयारी होनी चाहिए और ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए आपके पास अच्छे टीचर होने चाहिए। वो टीचर आपको बहुत कम मिलते हैं और मेरे पास उसका हल नहीं है, मां सिवाय ये कि डिस्टेंस लर्निंग से ज़्यादा फायदा उठाया। जी, थैंक यू। वेरी लास्ट क्वेश्चन, उसके आंसर के बाद I just request Mr. Shanza for her last remarks and then we will conclude the session. Raja Mirza, please. Sir, whatever it is to you actually, because with all innovation we have learned a lot out of you, because I've been also in the same university, Kaiyan. Sir, with your all experience of 50 years teaching, my question is that this mindset that we enter the school and then colleges and universities, and it is basically based on the result oriented. We want a good results, good marks, we put a tuition for that and all this. How this mindset can be changed in Pakistan, because that is something which is hindering the knowledge imparting to the youngster in Pakistan also, because once you do interaction with them, there are a lot of things which they understand perhaps in theories, but they cannot express because they never took that as knowledge. They took just to pass the exam. So what's your take on that, sir? So you put your finger on the problem. You've asked a very good question, but I don't have a very good answer. What I do know is that the government can be helpful only to a small extent. बुनियादी तौर पर ये तब्दीली घरों में आएगी जब वालिदैन अपने बच्चों की तरफ मुतवज्जे होंगे, उनके साथ वक्त गुजारेंगे, किताबें पढ़ेंगे और पढ़ के उन्हें सुनाएंगे। तो आप ये देखें कि जो बाकी दुनिया में वालिदैन जिस तरह से अपने बच्चों की घर में तरबियत करते हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह इजराइल में करते हैं, the amount of effort that Jewish parents put into their children is really what makes them so different from the rest of the world, and which is why this one country, which we don't like, it has a population of only 9 million people. Karachi is 22 million people, so you can fit 2.5 Israelis into Karachi. लेकिन क्योंकि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, हुकूमत उनका साथ देती है, पूरा मुआशरा एक ऐसी ज़हनसाज़ी करना चाहता है कि जानो 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 मुतजस्सिस ज़हन पैदा करता है। तो आप मुझे बताएं कि हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। ये सवाल मेरा आप सब के लिए है। मैं आपकी बात में पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ कि सर ने बात की है
उस पर देखें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारी इकोनॉमिक आउटलुक काम कैसे करती है। हमारे पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ में हमारी ड्राइंग रूम अप्रोच है। हमारे जो बजट्स हैं, हम अब घर में ड्राइंग रूम बनाते हैं, वो पूरे साल में सिर्फ 10 दिन उसकी लाइट्स ऑन होती हैं, वो ईद उल अज़हा का दिन होता है 10 दिन, बाकी आपका ज़्यादा टाइम गुजरता है आपके लिविंग एरिया में जहाँ आप बैठ कर टीवी देखते हैं, और वो आपकी जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वो सारी अपने ड्राइंग रूम में महंगी टाइल फ्रेमवर्क सारी चीज़ें वहाँ लगाई होती हैं। एंड दिस वर्क्स हर सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, और यही हमारी अप्रोच है, जिसकी वजह से जो असल में जो हकदार कंज्यूमर है, जो अवाम है, उस तक चीज़ उस तरीके से ट्रांसलेट नहीं होती हैं। दैट्स बीन एवरीवेयर, स्पेशली इन द पब्लिक सेक्टर। जब इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं हमारी खासतौर पर यूनिवर्सिटीज़ के, तो वो उस तरह की ऑर्थोडॉक्स प्रायोरिटीज़ पर लगाए जाते हैं जो मे बी अब इतनी रेलेवेंट नहीं है। एक बहुत मुख्तसर बात, बजाय टीवी देखने के किताब पढ़ें। Thank you very much. Sir, I want to ask one last question, please. Ma'am, please, we are very short in time. I just request Ms. Shanza, वो लाहौर से special travel किया है. Just give your last minute comments and then we'll wrap up the session. Thank you. Please. So, just touching a couple of points. एक तो on skills, I completely agree with Professor Saab's comments. I think for Pakistan, skills will play an integral role in the education system going in the future. However, I would caution कि ये आप government को जिम्मेदारी ना दें. Private sector में we have examples within Pakistan, institutions like Infinity. आप engineering की तरफ देखें, which is a conglomeration of 70 industries in Sheikhupura, जो सारों को employ करती है as soon as the students graduate. Maybe the Rawalpindi chamber should also look at that as a model, and this should be replicated across industries. The other thing is, जो Dr. Hoodboy ने कहा, it's a societal mindset. We need to give respect to skilled labor, which we do not. And unless we do that, you know, it's not going to, we're going to force our children to go towards the A's and A stars in which we have become experts. It has become so common for students to get 12 A stars, 14 A stars, and have no learning at the end of the day. I meet those students who still cannot, after getting those 14 A stars, write a college essay. So where are we at the end of the day? And so that is a question we need to ask ourselves. Thank you so much. Can I add one thing? मैं एक सवाल करना चाहती हूँ. Ma'am, please, thank you very much all the panelists and moderator Ms. Amna Salek. Thank you for the engaging discussion, and I hope that this is not the end of our conversations, and we'll keep continuing this through the academia industrial linkages. Once again, I thank you all for your time. Thank you. We thank I would like to RCCI request for the opportunity. You can please have your seats. I would like to request Vice Chairman Wasim Makbul for a vote of thanks. Assalamu alaikum. Valued guests, worthy panelists from the academia and the industry, management committee and our valued members, last but not the least, all the participants. As being the Vice Chairman of International Education Summit 2023, please accept my heartfelt gratitude for your participation and greeting this event. The subject which we have chosen today was certainly difficult and unfortunately the least priority in our country, but as Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry, we understand that this is the only way to prosper and excel as a nation. I am thankful for the patience, hearing, and once again appreciate all the guests, and I am optimistic that we are going into the new learning from today. Thank you very much. I would request President RCC, Mr. Saqib Rafiq, and Group Leader Suhail Altaf Saab to please accompany His Excellency, Ambassador of Indonesia, to give a very small tokens of appreciation to our speakers, panelists, and sponsors. I would request Chairman, Vice Chairman, Vice President to please join. I request Ms. Rabia Irfan, Director Academics, TMUC, to please come forward and receive your shield.
Ms. Javeria Tariq, Regional Manager, SI UK. Mr. Akil Ahmed, CEO, Gorings Overseas. Mr. Akil Ahmed. Now I would request Mr. Parvez Hudbai. Now would like to request Mr. Parvez Hudbai, nuclear physicist and activist. Ms. Sabina Zakir, Director Communication and Community and Outreach, TME Group. Now we'd request Muhammad Junaid Khan, Director, Marketing, Rifa International University. Next, I would request Ms. Shanza Khan, Founder and Head Counselor, I on IVY. Mr. Asad Malik, Head of Business Development North, ACCA. Vice Chairman था. Now we request Vice Chairman of this event, Mr. Mudassir Makbul, to please step forward and receive your token of appreciation. Mr. Waqas bin Mahmood, Chairman of this event. आपने लेनी है, आपकी बोलनी? For group photograph session, I would request all the panelists to please step forward. Ms. Shanza, Ms. Amna Salik, please come on the stage for a group photograph, please. Mr. Akil, Mr. Asad, all the panelists and speakers, please come to the stage.
I would request Ms. Amna Salik, Director Quality Assurance, TMUC Group, to please receive your award. जी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स और ऑर्गेनाइजिंग टीम प्लीज फोटो पिक्चर्स के लिए आ जाए. एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, ये कौन है? आप लोग ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ. इसको दो में ले जाना, दो फोटो, दो स्लॉट पे करते हैं, दो स्लॉट पे. जी काइंडली चाय के लिए प्लीज आप